Good evening. Good evening. Thank you for joining in for the final day. It's the last day of our festival, and we are all now going to celebrate the journey of light that we have been doing over the past 15 days. So it's all about celebrating the light today. And we'll start off with our usual message from the angels. So I invite Dr. Nupur to give us that message now from the higher realms. Yes. Thank you so much, Minuji, for giving me this opportunity to read a message coming straight from the light. Because these cards are created with the help of light. And of course, all the messages in this are all connected with the sparks of light. And we have been, connected with life. And today we are going to conclude this segment, not end. It is a new beginning. When everything concludes, then we are going to a new phase of life. And that's what we are going to do. So let's see what light has to say for us. Light says that, oh my God, this is beautiful. A birthing a new age. Wow. Birthing new creations, dreaming a new world into being. Wow. So this is what light is. It creates, it births, it, leaves all its imprints on all of us. This is what we are going to do. We are not concluding. We are going for a new beginning. Absolutely. We are creating a new beginning. With this, I really am thankful to light for being with us, divine light for being with us and guiding us at every moment and every step of this festival. Thank you very much. Over to me. Thank you, Nupurji. Yes, absolutely. Every ending has a new beginning, and that is what it is all going to be about. Thank you for that wonderful message. So I now invite our very steady expert of the whole festival, Harmeet Chawla. So final day also you are there. We cannot do without you. So you are going to be the observer again today. No problem. More than happy. It's a pleasure. It's an honor. Thank you. And since our other speaker hasn't come, I'll have to invite Sonal to take over the evening floor now. And we are, of course, very familiar with her already, our bubbly, chirpy young lady. So it's over to you now. Thank you so much, Meenuji. Even if I'll go for a small meditation, even if Vanita ji joins later, we can ask her to take the session and then I'll continue post that. No, it's okay. Do it. Yeah. You continue. Yeah. So hello, everyone. And I know that I don't need to talk about what is light and all that, because we all are very much aware of it. And people who even get that intention of joining a group like Mavin or Consciously Positive, they are already on that path of, reaching out to the ultimate goal. So again, the second part is also sorted. And then there's a whole festival that we all have been witnessing. So everything about light is something that you all are aware of. So I will not say anything about what is light, this light, that light. But as the topic is, let's just turn it on. So we'll directly go to that. And for that, I request all of you to please close your eyes, listen to my voice, and follow the words. So deep and slow breathing. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Imagine two balls of light. One, your heart chakra. Another one, the crown chakra. Center of chest and exactly on top of your head. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. See those balls expanding
the heart chakra going downwards, your stomach, your lower body. The crown chakra ball going down, forehead, eyes, nose, cheeks, ear, throat, and shoulder. Breathe in and breathe out. Now see both the balls colliding and covering your chest, your heart chakra, the light moving towards your hand till your fingers, forming a huge balloon. Feel the temperature, the brightness, the warmth of the light. Now see yourself inside that huge balloon, a bright light. Feel that light. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Stay with that light. That is your personal shell. That light is now part of your aura, your energy, your vibration. And breathe in. Breathe out. Breathe in and breathe out. Now, whenever you feel like, whenever you are comfortable, slowly, very slowly, open your eyes. Thank you. That was a very simple and soothing technique. Thank you. So, shall I continue with it? Please do. Okay. So, this was not turning on the light because we don't need to turn it on. We are having it always with us. It is just that वो कभी कभी एक reminder चाहिए होता है ना. You know somebody is with you, but आप पीछे पलट कर देखते हैं और आप वो हाथ से check करते हैं if that person, that support is with you or not. So this was only to experience, to recall that that light is very much with us. And like I said, that I don't need to actually talk about what is light, what we need to do with it, whatever. Because right from a simple thing that आप एक queue में खड़े हैं and you see, you know, a small kid or somebody who's old, somebody who's not well, and if it is not too hush for you, उनको उस queue में आगे बढ़ने देने से लेकर एक extreme level where you can feel that no, you have to, you know, adjust with certain things to understand that, you know, if you're getting an extreme reaction from somebody, to understand for that particular moment ki from where is it coming from. So when it is about light, we all know n number of things. There is a long list जहाँ जहाँ हमें वो light use करनी है या हम वो light use कर सकते हैं. So I was thinking कि अगर if I'll talk about all that, तब तो एक पूरा festival weekend as such we have been discussing about all these things. So I decided to talk about light on the context of 6 simple things जो हम बोलते हैं कि इंसान के पतन के लिए 6 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ह्यूमन डाउनफॉल एज पर if you talk about it as per Hindu theology, there are 6 enemies of mind. अब why I chose mind is जब हमने ये meditation किया, it was heart and crown. Mostly it is said that your heart is your subconscious mind. Your subconscious never directs you to the wrong side. हमेशा ये है जो गड़बड़ करता है. So what we really need to focus is, या जिसे थोड़ा सा संभाल कर चलना है, is this. And like we have already discussed it, there is no negative or positive. जो भी है वो अपना है. The light is our, the shadow is our. We just have to accept it and we have to channelize it. So I'll be talking about those 6 enemies जो Hindu theology के हिसाब से बोला जाता है is the
6 enemies of human mind. Well, there are so many others, but majorly these are 6. बाकी सब उसी के subdivisions हैं या उसी के reflections हैं. So we all have already heard about it, whether you talk about calm, growth, more. But I will just give a little thought of my own about whatever I feel about it, whatever I have observed, and what really works. So we'll start about calm. Calm is lust, but normally people get confused lust with sexual or sensual context. Calm is kamana, that is desire. It is not limited to only the sensual or the sexual part, kamana or desire of anything. The thing is, how we have to use light here is simple. The intention. Whatever you desire, if the intention, you just have to hold yourself back. और ये जो छोटी सी technique हमने की है, जब भी वो confusion आए, it is said that your intentions or your intuitions are the guiding lines from him. अगर आपको कुछ भी करने से पहले एक thought आ रहा है ना, whether it is right or wrong, it is for sure something that you need to sit back, you need to relax. You use this technique of the light thing and all that, and then think कि actually आपकी intentions क्या है. If you are sure that your intentions are positive about it, then go for it. So when we talk about desire or कामना, उस कामना के पीछे अगर intention negative है, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है that no, you are not very sure about it, then you need to hold yourself back. Next is growth. Trust me, this is one of my favorite. Because that is a very powerful emotion. If you ask me, I feel it is the most powerful emotion. क्योंकि whenever you hit anything with anger, तो वो जो strength physically हम feel करते हैं, even self defense में भी नहीं होता. कोई भी इमोशंस के साथ, आप प्यार के साथ कर लो, आप कितनी भी डेडिकेशन के साथ कर लो, आप कोई आप पर अटैक कर रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस में भी करेंगे तो भी वो स्ट्रेंथ नहीं आती जो जितनी ज्यादा गुस्से पे आती है. अब अगेन आई विल से यू हैव टू चैनलाइज इट. कोई बड़ा पत्थर या रॉक तोड़ना होता है या जब हम लोहे को मोल्ड कर रहे होते हैं, आप उसको यूं करके नहीं कर सकते. यू नीड दैट स्ट्रेंथ. सो व्हेनेवर दैट एंगर थिंग कम्स टू यू, हाउ यू हैव टू यूज द लाइट देयर इज, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है. और जो भी ऐसी चीज है जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ की उस वक्त आपको जरूरत होती है, चैनलाइज योर एंगर का एनर्जी देयर. बट अगेन आप सबने वो राइस एंड वाटर वाला एक्सपेरिमेंट सुना होगा. देयर वाज दिस जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो. उनके पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, बाद में भी एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 3 अलग अलग जार्स में राइस को वाटर में डिप करके रखा गया है और एक को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स, बहुत सारा प्यार दिया गया है, एक को कुछ नहीं बोला और एक को बहुत नेगेटिव बोला गया है, उसे बहुत गालियां दी गई हैं, बहुत अब्यूज किया गया है. एंड इट वाज ऑब्जर्व. ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन अभी भी मिलेंगे. जिसे बहुत नेगेटिव वे में ट्रीट किया गया था वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है. जिसे कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिली, थोड़े टाइम के बाद वो भी हो जाता है. द वन जिसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया है, पॉजिटिव बातें बोली गई हैं, that stays for a longer time. So whenever even this anger wala thing you use, don't forget. जैसे मैं बता रही हूँ cooking, मैंने पहले भी बोला है, I use that as a switch to change my emotion. But don't forget, when you cook, what energy you're putting into it. You cannot put your anger into your food or anybody else's food. So, or if you're making something, you cannot put anger into it. So initially आपको क्या करना है? For a while, you just have to feel that light and say that you are releasing the anger. और जब आपको ये confidence आ जाए कि हाँ, now you are in control of your emotion, then change that anger. Every time you're hitting, you have to say, I'm getting healthy. Every time you're putting that anger wala strength into something, you have to say it is getting some productive outcome. And later you'll realize by the time that physical activity of yours is over, not only the anger goes, you will be positive and you will get a very positive outcome or a positive thought or a guidance. So ना सिर्फ वो जो एक emotion था जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली काम कर रहा होता, हमने उसे कंट्रोल किया, उसे संभाला, उसे एक्सेप्ट किया, उसे रिस्पेक्ट दिया, but at the same time you will convert it to a positive thing.
अब काम और क्रोध के बाद आता है लोभ, जिसे हम कहते हैं ग्रीड। बहुत सिंपल है, व्हाट आई फील इज, हाँ ऑफ कोर्स अब ये ज्ञान इतने पहले से नहीं आया, ये सब ज्वाइन करने के बाद ही आता है। इफ यू विल लुक एट अ पोजीशन ना कि हाँ आई एम हियर, एंड आपके अंदर वो लोभ, वो ग्रीड आ रहा है कि मुझे उसके पास जो है वो चाहिए, यू शुड नॉट फॉरगेट आपके पीछे भी ना 6-8 लोग होंगे जिनको वो चाहिए होगा जो आपके पास है। सो इफ यू विल गो फॉर अ रॉन्ग पाथ, यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट कर्मा। तो वो जो पीछे लोग हैं ना, वो लोग भी वो पाथ ढूंढ रहे होंगे जो आपके पास है उस चीज को अक्वायर करने के लिए। देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट, व्हेन सच थॉट विल hit you and you will choose the path कि नहीं यार, that belongs to that person, that belongs to that person, this is mine, I have to focus at this, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पे फोकस करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, वैल्यू करना what you already have in your hand, that grows. So obviously you will grow, whatever you are looking at you might reach to another level. प्लस वो जो आपके पीछे हैं, जो आप पे फोकस करके बैठे हैं कि भाई इसके पास जो है वो मुझे चाहिए, their actions will be taken care by him, क्योंकि आपने अपने टाइम पर पॉजिटिव पाथ चूज किया। सो आपकी प्रोटेक्शन जो है वो उस डिवाइन लाइट का और उस डिवाइन का काम है। अब ही विल टेक केयर ऑफ इट, कि शी इज फोकसिंग ऑन हर कर्मा, तो उसकी सेफ्टी और उसका प्रोटेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जब ये लोभ वाला पार्ट आए, हाउ यू हैव टू डाइवर्ट और चैनलाइज इन एक्सेल, whatever is the thing that you're looking for, उसमें जो एक्सपर्टीज चाहिए, उसमें जो स्किल चाहिए, आप उस चीज पे काम करो। So as such you will improve, you will get something better and bigger than जो लोभ या जो greed आपके दिमाग में उस टाइम आएगा। Then it is more. Attachment and love are two different things. वो बोलते हैं ना, बचपन में भी हमने सुना है कि when you love a flower you will water it, and when you are attached to it you will pluck it. That is the difference between love and attachment. So whenever that thing comes, आपको किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है, वो ना सिर्फ आपके लिए बहुत डेंजरस और नेगेटिव हो जाता है, जिस इंसान से या जिस चीज से, जिस पोजीशन, जिस काम से, जिस एक्टिविटी से भी आपको अटैचमेंट होती है, या वो मोह वाली चीज आती है, इट गोज टू रॉन्ग ट्रैक। बिकॉज हमें सिखाया जाता है बाय there is nothing like unconditional love. Love has to be unconditional, but because these days people do get confused with attachment, want, wish, वो बोलते हैं ना आदत, लत, हर किसी चीज को हम प्यार बोल देते हैं। आपको लत है तो भी आप बोलेंगे मुझे प्यार है, आपको किसी की आदत हो गई है तो भी आप बोलेंगे प्यार है। इसलिए अनकंडीशनल लव टर्म आया है। देयर इज नथिंग लाइक अनकंडीशनल लव, लव हैज टू बी अनकंडीशनल। सो जब भी ऐसा कोई आए, सो यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ व्हाटएवर दैट थिंग, ऑब्जेक्ट और पर्सन इज, जिससे वो है, यू जस्ट हैव टू चेक विद दिस थिंग, क्या वो पोजेसिवनेस का थॉट आता है। सी मेरा बहुत सिंपल फंडा है, पोजेशन हमेशा प्रॉपर्टी का होता है ना, कि इसका पोजेशन मिल गया, उसका पोजेशन मिल गया। इंसानों को पोजेशन नहीं होता। सो व्हेन यू गेट पोजेसिव अबाउट समथिंग और समवन, दैट मीन्स आप उसे ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो यू हैव टू लाइक डिफरेंशिएट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि वेदर इट इज लव और दिस इज अटैचमेंट। अटैचमेंट कैन नेवर बी प्रोडक्टिव, यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू समबडी, ये काम करना बंद हो जाता है। सो इन दैट केस अगेन आई विल से बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा आदत और लत, तो वो आदत और लत छुड़ाना आसान काम नहीं है। देयर कम्स द लाइट थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन। और जब वो कंफ्यूजन हो ना, हम सबसे ज्यादा काम तो यही करते हैं, हम खुद को कन्विंस करते हैं नहीं नहीं प्यार ही है, वो नहीं है भाई, वो अटैचमेंट नहीं है, इट इज लव। सो अगर ऐसा है, I always believe if you are angry, give it some time to take the decision. If you're very happy, give it some time to take the decision. उस इमोशन के साथ लिया हुआ डिसीजन हमेशा उस इमोशन से गाइडेड होता है। एक काम और सॉर्टेड माइंड की जब जरूरत होती है, सो व्हेन दिस लव एंड मोह अटैचमेंट थिंग कम्स, यू जस्ट हैव टू काम डाउन। कोई भी चीज एकदम ऐसे करने की जरूरत नहीं होती व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट इज मद, विच इज ईगो, जो आज के डेट में सब में कूट कूट कर भरा होता है, और लोग उसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और ईगो में बहुत ही मुश्किल चीज है, जिसमें ईगो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही बोलेगा, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाकियों को समझ में आता है। सिमिलरली उनके अंदर का जो ईगो है वो आपको पता चलेगा इट इज ईगो, और उनके हिसाब से ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही होता है। ये दुनिया का बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। वो देयर इज नो लॉ बुक कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है और ईगो कहाँ है। बट we cannot work on others, we can work on ourselves. We have to understand ego जो है ना, it is basically fear. लोग एक वॉल बनाते हैं जिनके अंदर वो डर होता है। सो ईगो जब हमें आता है वो कब आता है कि जब आप ना, कि लोग आप पे अटैक ना कर दें तो आप अपने आप को ऐसे अग्रेसिव दिखाते हैं कि ज्यादा बात नहीं करना मुझसे, ऐसे रहना वैसे रहना। सो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि ईगो रखने का मतलब है बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, खुद पर बहुत काम करना है। यू सिट डाउन एंड हील योरसेल्फ। अगर आप ईगो बेस्ड काम कर रहे हैं मतलब यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आपको कितनी शील्डिंग की जरूरत पड़ रही है, तो इतना डर किस चीज का है? सो रिलीज दैट फियर, और उस फियर को रिलीज करने के लिए हील करना है खुद को और कुछ नहीं करना। सो एज फार एज दैट मद, दैट ईगो पार्ट इज कंसर्न, सो वो डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो इन अ वे, लाइक आई सेड कि वो एक शील्डिंग बनाते हैं। सो फॉर दैट डिफेंस मैकेनिज्म क्यों होगा? जब आप वल्नरेबल हैं अंदर कहीं तभी ना। तो वो जो वल्नरेबिलिटी है आपको उसको लाइट देनी है, आपको उसको वाटर करना है, और उस वल्नरेबिलिटी को आपको स्ट्रेंथ और पावर में चेंज करना है। सो जब भी ईगो चीज आए, पहली चीज है जैसे पहले के इतने सेशंस में डिस्कस हो चुका है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कि हाँ आई एम डूइंग इट आउट ऑफ ईगो। मत बताओ दुनिया को, कोई जरूरत नहीं है। आपको एक इंसान से सच बोलना जरूरी, दैट इज यू योरसेल्फ। टेल योरसेल्फ कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया, मुझे सामने वाले को बताना नहीं है मेरा ईगो है, मैं तो यही बोलूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर खुद को बताओ कि ईगो है। सिट डाउन एंड हील योरसेल्फ। वो कौन सा इमोशन है, वो कौन सा डर है, वो कौन सा वीक पार्ट है आपका, जिसकी वजह से आपको उस ईगो का जो कवर है वो ओढ़ना पड़ता है। जब उस वीकनेस पे काम करते जाएंगे ना, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये जो बाहर का ईगो वाला कवर है ना, वो वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। आई विल नेवर से कि पूरी तरीके से ईगो छोड़ दो, छोड़ना तो चाहिए बट हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो मैं बोलती भी नहीं हूँ कि करना चाहिए, बट यस वो कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी रियली नीड टू स्प्रेड लाइट। और हर इंसान ईगो लेकर बैठेगा तो लाइट स्प्रेड कौन करेगा? and we all are responsible for the society. We really need to understand it. आप ये जो अपना ग्रुप है मेविन है या कॉन्शियसली पॉजिटिव, आप इसके बाहर जाकर देखो, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल। मैं रोज लोगों से बात करती हूँ, वो बोलते हैं अरे मैंने मोटिवेशनल बुक पढ़ी जिसमें लिखा है किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने बारे में सोचो। खुद के बारे में नहीं कर सकते तो किसी और के बारे में क्या करोगे? इतनी सारी चीजें बाहर अवेलेबल है जो लोगों को गाइड कर रही है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और वो सेल्फ सेंटर्ड वर्ड यूज नहीं करते, वो रिस्पेक्ट यूज करते हैं। पहले अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? सो कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा जो ये समझे कि आपको ह्यूमन फॉर्म अगर मिला है देन बिहेव लाइक अ ह्यूमन एटलीस्ट ना। वो लाइट वर्कर और वो वाला लेवल बहुत बाद में आता है, हम लोगों को उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत काम करना है। ह्यूमन लेवल पे हम इतना कर सकते हैं कि बगल वाले को आप 10 लोगों को हाथ मत दो, एक इंसान को तो हाथ दे ही सकते हैं, इसलिए भगवान जी ने 2 हाथ दिए है ना। सो एज फार एज दैट ईगो पार्ट इज कंसर्न, यू रियली, जिस दिन ये समझ में आ गया, ईगोइस्टिक इंसान को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए भाई तुम वीक हो तभी तुम ईगोइस्टिक हो। तो या तो वो ईगो ही रख ले और ये समझ ले कि भैया तू वीक है, या तो वो वीकनेस हटा दे और स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि ईगोइस्टिक का मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, तो ब्रह्मा बनने के लिए उस लेवल पर तो आओ। एंड लास्ट वन इज मत्सर, विच इज ईर्ष्या और जेलसी। कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो है ना वो ही आगे बढ़ाती है। सो व्हेन इट इज अबाउट ईर्ष्या और जेलसी, डोंट लीव इट, बट कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए। सो वो जो कॉम्पिटिटिव व्हेन फील और एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड दिस थिंग, ईर्ष्या मत्सर या जेलसी, इट कम्स आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप किसी से जेलस हो रहे हैं मतलब आपको ऑलरेडी पता है वो इंसान उस जगह पर है जहां पर आप नहीं है, तो क्यों करना उसको देख देख कर जेलस फील? आप अपना लेवल ऊपर बढ़ाओ कि अगला आपको देख करके जेलस फील करे। अगेन व्हेन यू होल्ड ऑन टू दिस इमोशन, दैट
अरे अच्छा मुझे जेलसी फील हो रही, मतलब मैंने पहले ही मान लिया। इफ यू फील हाँ ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़े अच्छे कपड़े पहने, इसका मतलब है आप मान रहे हो आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप बड़ा इंटेलिजेंट अपने आप को प्रूव करने पे लगा हुआ है। दैट आपको ऐसा लग रहा है आपका इंटेलिजेंस लेवल कम है, बड़ी बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं, इसका मतलब है आपको लग रहा है आप में स्ट्रेंथ कम है। जिस दिन आप ये सोचोगे यार ये तो अच्छी दिख रही है, अब मुझे ना थोड़ा खुद पे काम करना है, अगली बार मैं से, दैट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। ऐसी वाली जेलसी तो होनी ही चाहिए, तभी तो ग्रो करेंगे। सो एज तो मैं कोई भी पॉइंट्स पे ये नहीं बोलती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आई ऑलवेज फील दैट चैनलाइज करना है। सो ये मेरे थॉट्स है दैट मेरे अंदर सारे इमोशंस आते सारे। इट इज जस्ट दैट मेडिटेट कर करके, मेविन के सारे सेशंस अटेंड कर करके, मैम से डिस्कस कर करके मुझे ये पता चल गया है कि करना क्या है। कि आज मैं एंड सीरियसली मैंने ये क्यों शेयर किया दैट जो अपने जापानीज में ना, जब मुझे बहुत गुस्सा, मुझे शुरू से ज्यादा गुस्सा आता था, फिर मैंने बोलना शुरू किया मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे पता था मुझे गुस्सा आता है, मैं बस बाहर नहीं दिखाती थी, मैं वो इंटरनली उस पर वर्क करती थी। और मैं ना कुकिंग करते करते वो आटे पे सारा गुस्सा निकालती थी और मुझे लगता था वाह मुझे क्या तरीका मिला। सडनली मैंने एक दिन ये चीज पढ़ी कि यार मैं खुद खा रही हूँ और मैं उसमें गुस्सा डाल रही हूँ। दैट वॉज द डे जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने पहली बार पंच करना है और ये सोचना है कि मतलब मेरे हेयर अच्छे हो गए अगले पंच में मतलब स्किन अच्छी हो गई मेरी। उसके बाद मुझे सोचना है कि हाँ आई एम गेनिंग वेट। उस ऐसे ना छोटी छोटी चीजें करनी है। देन कम्स कि आई एम फीलिंग गुड, या आई एम फीलिंग हैप्पी, ओके आई एम फीलिंग पीसफुल। अब इस वाली चीज से आई एम गेटिंग सक्सेस, इससे आई एम गेटिंग अबंडेंस। सो वो जो एंगर है ना, मुझे बाद में समझ में आता है वो एंगर तो कब का चला गया। मैं उस खाने में एक्चुअली वो एंगर खत्म हुए जमाना हो चुका, मैंने उस पर एक्चुअली पॉजिटिव चीज डालनी शुरू कर दी थी। एंड दैट इज द डे कि मैं वेट करती हूँ कि मुझे गुस्सा आए और मैं ऐसी वाली कोई एक्टिविटी करूँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो ईदर मैंने देख करके समझा है कि हाँ ये कैसे वर्क हो सकता है, और दूसरा आई हैव रियलाइज दैट दिस इज हाउ you need to really accept it and we need to respect these emotions. We really need to do that. जैसे मुझे जैसे उस दिन हमने मैम की का सेशन अटेंड किया था जिसमें द शैडो वाला, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई ये बोलती मुझे तो जेलसी नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इसी बात पर आई थी, और ज्यादातर लड़कियां ही बोलती मुझे जेलसी नहीं होती, सबसे ज्यादा जलन कुकड़ी लड़कियां ही होती हैं। बिकॉज हमारा ना वो एक अपब्रिंगिंग हो गया है कि लुक्स का मतलब है लड़कियों से रिलेट करके रख दिया है कि सुंदर होना चाहिए, लड़कियों लड़कों को जैसे कोई मतलब ही नहीं अच्छा दिखने से। पर वो इतना ज्यादा डाला जाता है ना कि हमारे लिए पैरामीटर हो जाता है कि आप कहीं भी जाओ तो आपको अच्छा क्यों दिखना है यार, सबको भगवान जी ने अच्छा बनाया ही हुआ है। बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम उसे एक प्रोडक्टिव वे में करें ना कि हाँ अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो से हाँ वो अच्छी लग रही है, आज थोड़ा सा मैं 19 हो गई वो 20 है, अगली बार मैंने 21 होना है बस। यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। आप उसके लिए नहीं सोचोगे कि ऐसे करके आई है वैसे करके आई है तो बहुत पार्लर में टाइम स्पेंड करती है। कहाँ उस सामने वाले को एनर्जी दे रहे हैं हम, खुद को एनर्जी दो ना, वो थॉट आने दो और उस थॉट को जाने दो। वहां बैठो और ये सोचो अब खुद पे कहाँ काम करना है, और खुद पे काम करने के लिए बहुत कम टाइम है। कितना भी काम करे भाई गॉड, कितना काम करना होता है खुद पे। 6 ट्रेड्स तो यहाँ है। व्हेन यू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स उसमें एक आलस से भी आ जाता है, फिर उसके बाद इन सब चीजों के अलावा उसमें 10 और चीजें आ जाती है, फियर आ जाता है। सो ये तो मेन ट्रेट्स हैं, इनके जो सब डिविजन्स हैं या इनसे जो दूसरे फॉर्म होते हैं या जो रूट कॉज होते हैं, वो लिस्ट अगर हम देखने जाएंगे तो कितनी चीजें हैं जिसपे खुद पे काम करना है। सो अभी तो आज एक का पता चलता है, कल दूसरे का पता चलता है, एंड वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। सो ये जो लाइट वाला है ना, वो मुझे मुझे सीरियसली ऐसा लगता है जब कुछ ना समझ में आए, ये भूल जाओ जो सोनल ने बोला, ये तो मेरा पर्सनल है जो मैंने ट्रिक्स निकाली है। जस्ट सिट डाउन। वैसे तो हम 7 चक्रास पे भी लाइट यूज कर सकते हैं, बट आप सिर्फ हार्ट चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पे लाइट इमेजिन करिए। बाकी क्या करना है या कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को लाइट के अंदर डालना है। वो सारा गाइडेंस वो डिवाइन लाइट ही करता है, बिकॉज वो सारा गाइडेंस फिर वो कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दैट लाइट। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आंख बंद करके वो लाइट ही तो इमेजिन करते हैं। पहले कुछ कुछ टाइम लगता है वो आसपास की किटर किटर से अपना दिमाग हटाने के लिए, फिर उसके बाद हम जब वो जीरो वाले लेवल पे आ जाते हैं ना, सो ईदर यू जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बाकी का काम वो लाइट कर रही होती है। और
when you'll get out of it, you will have your answer, is what I feel. So here I rest myself and whatever I was having to talk to you. बाकी अब आप लोगों को कुछ पूछना है या if there is anything that you want to share about all these things, please go ahead. Thank you so much, Sonal. That was amazing. As bubbly as you are. Thank you. So I'll invite Hermit to first of all comment and ask any questions. Then we'll move on to next part. Thank you, Meenuji. So, Sonalji, good evening. As Good evening. ever, lovely listening to you. I was very keenly listening to what you were saying, absorbing everything. And I had a few, thoughts in my head, and it was racing in my head. So, if you allow me to put a few thoughts on the table, and then, you might agree, might disagree, or you might have a contrarian view, or I would be more than happy to be given an alternative, answer to that. No, So, please go ahead. I'll start with something. You very pertinently talked about selfishness. You mentioned very floatingly selfishness. कि भाई हम इंसान हैं तो कब तक अंदर हैं, लोगों के लिए भी देखना है, which is absolutely a brilliant thought, and that's how we need to be. But मैं ना आज किस्मत की बात थी, सुबह कुछ पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि स्वार्थ का मतलब क्या है, और आज ही की बात है. तो स्व मीन स्वयं, और उसको अगर हम तोड़ दें, और स्वार्थ में अर्थ जो है वो अर्थ है मीनिंग. तो स्वार्थ का मतलब है स्वयं को अर्थ देना, मीनिंग देना. तो देयर आर फिलॉसफीज एंड फिलॉसफीज टू गो इन. तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर आप स्वार्थी बनते हैं, विच इज स्वयं को अर्थ देते हैं, तो जब आप अर्थ दे पाएंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, या अपने एक लेवल तक को आप अपनी जो चीजें आप चाहते हैं करना उसको कर लोगे, एंड यू कंटेंट, तब आप जाके एक्चुअली किसी का भला कर सकते हो. अगर आप खुद ही परिपक्व नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, यू आर नॉट फुलफिल्ड, द चांसेस ऑफ योर either giving happiness or being a giver becomes zero, because then it comes out of the need for either doing PR, or because you need to prove a point, which again gets into greed, or trying to prove a point to somebody that I am a giver. So एक मेरा ये point है. Second point क्या है, which again this is my own this thing, कि the emotions that you mentioned are part of every human journey, and they will continue to be with us, and that is the reason भगवान भी कहते हैं माया जाल है, तो ये इंद्रियां हैं तो ये तो कभी भी नहीं हटेंगी. इंद्र भगवान भी नहीं कर पाए इंद्रियों कंट्रोल, तभी वो इंद्र हैं. वो तो बार बार उनका कैरेक्टर यही है कि उनकी सारी इंद्रियां जो हैं वो वश में होती नहीं, वो लड़ते रहते हैं इंद्रियों को करने में. So the other factor is, the other logic of theory in this is, अगर आप में गुस्सा है तो अगर आप उसको बंद दबा दोगे तो आज नहीं तो कल फटेगा. तो एक बार या तो उसको पूरा ही आने दो बाहर. दूसरा मेरा लगता है जो आपने 6 पॉइंट बोले वो सारे इंटरलिंक्ड हैं. तो ईगो से ग्रीड से काम, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं. दे आर सो while they are separate in their this thing, but they are also very interlinked. They're very interlinked. ये आखिरी पॉइंट जो मैं मेंशन करूंगा कि, और यान नुपुर मैम, आई वुड लाइक यू टू बी मोर कीनली लिसनिंग, is I have realized in life that 90% of the people are lazy, 90%. And human beings have a tendency to gravitate towards finding a solution or getting something in life which is the easiest and the laziest way of doing it. And then they sit in judgment of the 10% who really use their brains and you are very active. They're smart workers and hard workers. They go after it. Because वो ना छोटा रास्ता या easy रास्ता नहीं ढूंढते. तो वो हर वक्त बोलेंगे कमेंट, यार जब ये काम ऐसा सकता तो इसको डिफिकल्ट करने की क्या जरूरत थी.
तो अब जो आदमी वो कर रहा है उसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है, बट उसके लिए यार ये क्या इतनी मेहनत कर रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत है ना? होता है ना, ऐसे करते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि unless and until you do not have within your life, each one of us, a larger purpose which we follow, or a larger perspective in life that we follow, we will become slaves to these indriyas. मतलब मोह, ग्रीड। अगर आपकी जिंदगी में कुछ पर्पस आ गया जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो, जो आप करने को तैयार हो, तो उसके लिए फिर आप वो कहते हैं यार इसमें ना मेरे पास टाइम नहीं है ग्रीड के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है एंगर के लिए। अब जैसे मैंने बड़ी बार इस फोरम पे बोला है, now that I'm touching nearly 50, when I was in my 20s and 30s, God forbid मेरे को गुस्सा चढ़ जाए, मेरे सामने कोई ना आए तो बेटर था। But as I age and I realize, I become a reasonably a public figure, and the stakes in what I am trying to achieve are so high that I had to work on myself कि नहीं यार, I can't let the anger get the better of me. Right. And it was not in the sense of कि वो जो मैं कर रहा हूँ is so huge. I cannot give that up for anger. So I had to work on the anger, not because I had a reason. So, and I said, okay, if I become greedy, I might lose the path to what I am doing. If I become XYZ or this, मैं ये नहीं करना चाहता, या मैं कहीं पार्टी पे नहीं जाऊंगा, या मैं एक मेरा कॉन्डक्ट रहेगा अपने आप को लेके, फिजिकल एंड मेंटल। मैं हर चीज को ना उस बेंचमार्क से करता था कि मेरे को वो अचीव करना है। उसके सामने ये सारी चीजें ना व्यर्थ हैं। तो कहने का मतलब है यू नीड टू हैव अ लार्जर पर्पस। इफ यू डोंट हैव अ लार्जर पर्पस, डे इन डे आउट आप इन चीजों में अप एंड डाउन होते रहोगे, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। बिकॉज ये तो मैस्लाउ की भी थियरी है कि वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसमें भी ग्रीड चाहिए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आदमी ढूंढता है, उसमें भी जो पुश है वो ग्रीड है। Hmm. तो ये मेरा पॉइंट है, मगर मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ लाइट डालें जो मैंने बोला है। व्हाट आर योर ओपिनियन? वुड यू एग्री, डिसएग्री, एंड इफ यू डोंट एग्री देन व्हाई, डिसएग्री देन व्हाई? You asking me about it? या No, or anyone. absolutely. See, when you said about that Swarth wala thing, I'll tell you, there was a time when for me it was like Sonal and Sonal's family. And family matlab immediate family, that's it. वो changes कब आए? Because अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से रेकी कर रही हूँ and all that. And मेरा कोई ऐसा दूर दूर तक thought नहीं था, trust me, कि मुझे ऐसा कुछ करना है या ऐसा सोचना है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती, but yes, I forget about my family. And even now I go like up and down in this journey. थोड़े टाइम पहले जैसे मैंने मैम को बोला, कहीं फोकस चला गया था कि मैम बस ना मुझे ये काम करना है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए. इट वॉज ओनली मैं. एंड लास्ट मंथ आई मेट समबडी एंड आई वॉज लाइक कि अरे मैं कैसे भूल गई इन चीजों को. एंड आई हैड अ वर्ड विद मैम एंड आई टोल्ड हर कि नहीं मैम, मैं गड़बड़ कर रही थी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ. मुझे इतना काम करना है कि ये जो बाकी. सो वॉट यू सेड अबाउट द स्वार्थ, कि जब आप खुद को, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर मुझे 2 रोटी चाहिए तो मैं उस 2 में से 1 नहीं दूंगी. बट येस, अगर मेरे इंटेंशंस हैं कि मुझे अगलों को, तो मैं 4 पे फोकस करूंगी. सो इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द चैनलाइजिंग योर थॉट. कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने में से किसी को दूं. वो सोचना भी बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए. मैंने किसी एक वेब सीरीज या मूवी में एक लाइन पढ़ी थी, इट टच्ड मी लाइक व्हाट, कि जिस दिन आप किसी और के लिए कुछ कर पाए वो दिन शहादत का होता है. वो दिन है और आज तक दैट इज माई स्टेटस. अब वेदर आई एम इन दैट पाथ, इन दैट जर्नी और नॉट, मैं कभी होती हूँ कभी हट जाती हूँ. वो मैं ऐसे सोच कर नहीं चलती. बिकॉज एवरी मॉर्निंग लाइफ हैज सर्टेन थिंग्स फॉर मी. भगवान जी के पास अलग प्लान्स होते हैं, मेरे प्लान्स में तो वो चलेंगे नहीं ऑफ कोर्स. बट येस, वो रिमाइंडर जब भी आ जाता है ना, जैसे मैंने आज बोला कि लाइट के बारे में सबको पता है, पर हमें ना कभी कभी वो रिमाइंडर चाहिए होता है. लाइक द फीमेल आई मेट लास्ट मंथ, मैं कैसे भूल गई कि यार हाँ मुझे, माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि उनको किसी एक बच्चे का, बहुत बड़ी बात नहीं बोलती थी, किसी एक बच्चे की पढ़ाई मुझे करवानी है. एंड वी लॉस्ट टू कैंसर. फिर मेरा ये थॉट नहीं था. बट
मैं हमेशा मेरे दिमाग में ये था अम्मा के जाने के बाद कि ये चीज मुझे करनी है. So when I met that lady and she told me कि उसके बच्चे के ट्यूशन की फीस का इशू हो रहा है, that was that reminder कि सोनल तू ना अपने टारगेट्स, अपने लाइफ के गोल्स फिर से तूने अपने तरफ कर दिया है. सो मैं खुद भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाई हूँ अभी कि मैं से बाहर निकल पाऊँ. बट आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड कि ये रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं, ये फेस्टिवल्स होते रहते हैं मेरे रिमाइंडर के लिए. सोच पागल हो गई क्या, ये क्या हो रहा है. मैंने लास्ट सेशन के बाद पोस्ट किया था, आप लोग मेरी आदत बिगाड़ देते हो, मैं इतनी मुश्किल से ऐसे खड़ूस और अकड़ू बनती हूँ, आप बोल देते हो माफ करो लोगों को उनमें अच्छा देखो. मैं लोगों की बुराई देख देख कर ना ऐसे एटीट्यूड देखने की प्रैक्टिस करती हूँ. फिर ऐसा एक सेशन होता है और मुझे बोला जाता है माफ कर दो, उनका कर्मा तुम्हारा कर्मा. तो मेरे लिए तो कभी कभी मेविन का जो है ना वो नेगेटिव काम कर जाता है. मुझे ऐसा लगता है दुनियादारी में ये सब चीजें काम नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मुझे शुरू से था कि डायरी का वो टीवी मूवी शूवी में देख के ऐसा फैशन चढ़ गया था डायरी. तो कभी रेगुलर होता था, कभी जब मन हुआ. वो संदीप जी ने जर्नलिंग की ऐसी गंदी आदत डाल दी है मेरी, तौबा तौबा. मैं रोज नहीं लिखती, बट दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, आई लव इट. मैं कभी भी नहीं लिखती हूँ, मतलब why you need somebody to talk, you just write it down. और कभी कभी ना आपको जो पता नहीं होता आपके अंदर चल रहा है, जब आप लिखने लगते हो वो आपको तो चलता है अच्छा मैं ये सोच रही थी. तभी पता चलता है आपके अंदर काम आया, क्रोध आया कि ईर्ष्या आई. वो जब लिखने बैठो ना, अच्छा अच्छा मैं ऐसे सोच रही थी क्या, मैं तो अपने आप को बड़ी हीरोइन समझ रही थी, मेरे अंदर इतना बड़ा डेविल बैठा है. सो व्हाट आई फील इज दैट what you were talking about, no, कि आपको वो द हायर पर्पस इज व्हाट आई फील कि कोई नुपुर मैम जैसा मिल जाए ना, जो आपको ये बताए कि बेटा हायर पर्पस. यार जो मैम मुझे बोलती थी सोनल तुम इन चीजों के लिए बनी नहीं हो, तो मैं बोलती थी अच्छा हाँ 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 फिर मैम मुझे 1 साल के बाद वापस सेम चीज बोलती थी सोनल तुम इन चीजों के लिए बनी नहीं हो, तो मैं वहां चली जाती हूँ. बट आई फील that counting the blessings and जो gratitude वाली चीज है ना, it is beautiful, that's magical. जिस दिन आप ये काउंट करने लग जाओ that I have a group like this, कितने लोग हैं यहाँ पर. मैं बॉम्बे की बात करूं, मेरे सर्कल की बात करूं, गूज़बम्स आ गए. कितनों को मैम मिलती हैं, कितनों को मेविन ग्रुप मिलता है, जिनको वो थॉट भी छोटे लेवल पे भी डाला जाता है कि सोच लो दूसरों के बारे में. इज व्हाट आई फील कि मतलब आई वाज नॉट लाइक दिस, बट अब वो थॉट आता है और बहुत जेन्युइनली आता है कि करना है किसी के बारे, लोगों के बारे में थोड़ा सा अपने से हटकर करना है, और बहुत दिल से आता है. चला भी जाता है, चला जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है, फिर याद आता है सडनली. बट जब वो याद आता है तो मैं बहुत शिद्दत से ये चीज करती हूँ, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू everyone who is associated to me. Trust me. Lovely, lovely. Anyone else has a question? Nupur ma'am, how about you? Meenu ji, Sandeep ji, anyone? मैं एक ही बात बोलूंगी. Please. मैं एक शेर जो है बहुत बचपन से मैं सुनती आई हूँ, आप लोगों को भी पता होगा. ये इकबाल साहब का शेर है. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या. इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों ने कह दिया. जो मर्म होता है जब उसको पकड़ लिया तो खुदा खुद ही झुक जाएगा. वो हायर बीइंग, हम उनको खुदा का नाम देते हैं, हम हायर बीइंग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर वो खुद आपके आगे झुक करके पूछेगा बता तेरी रजा क्या. क्या बस और कुछ नहीं कहना. To this I want to share one thing. मैम से तो obviously मेरी बात हुई है. Right from the first level of Reiki, मैं हमेशा डाउट करती हूँ, और मैम जानती हैं, वो मुझे बोलती है बिलीव करो सोनल ऐसा हो रहा है, और मैं हमेशा बोलती हूँ मैम मुझे ना वो इंट्यूशन हो रहा है या वो मेरा दिमाग दौड़ रहा है, मुझे कैसे समझ में आएगा, कि मैं कैसे समझूं कि हाँ रेकी से मुझे ये पता चल रहा है या कोई हायर. और मैं तो ये भी बोलती हूँ कि कोई है भी, कि हम ऐसे उल्लू बनाते रहते हैं खुद को कि हाँ हाँ है, कोई है ऊपर, ऐसे बेवकूफ बनाते रहो, और ऐसे एक दिन आदमी मर जाए और उसको पता ही ना चले कि ऊपर कोई है कि नहीं. इतने एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं कि मैं आज भी ना वो एक्सपीरियंसेस शेयर भी करती हूँ.
बट फिर भी डाउट करती हूँ. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी ना, जो कॉन्स्टेंटली, सो मैम का एक मेडिटेशन है, मुझे जिसको भी शेयर करना होता है वो पहला होता है, दैट इज फॉर्च्यून एंड लक. आई हैव ऑलवेज बीन शिव भक्त, जब से मुझे भगवान जी की समझ आई होगी, स्कूल डेज और व्हाटएवर, कि हाँ मुझे शिव जी से एक स्पेशल कनेक्ट फील होता है. सो पहली बार जब मैंने वो मेडिटेशन की, मैम ने बोला कि यू नो योर डिवाइन गाइड विल बी देयर, और उनके हाथ से एक लाइट आएगी. अब पहले तो मैंने ऐसे आंख बंद करके सोचा कि हाँ इंग्लिश टर्म है, मतलब कोई ऐसे व्हाइट गाउन में मुझे दिखेंगे. फिर बात आई कि नहीं नहीं ऐसे ठीक है, भगवान जी दिख रहे होंगे. तो मैंने अपने आप को इतना प्रेशराइज किया कि मुझे शिव जी दिखेंगे, मुझे शिव जी दिखेंगे, मुझे शिव जी दिखेंगे. मैं मुझे एक्चुअली ऐसे बड़े से कृष्ण भगवान दिखे, और मैं तब भी फाइट कर रही हूँ कि आप कैसे दिख रहे हो, मैं तो शिव भक्त हूँ, मुझे शिव जी दिखने चाहिए. फिर मेरे मॉम डैड ने देवी का मंदिर बनाया, तो मैं ये भी बोल रही हूँ भैया अगर फैमिली की तरफ से कोई आना होगा तो देवी जी आएंगे. मुझे लिटरली राइट साइड में देवी और शिव जी लेफ्ट साइड में दिखी, दोनों पीछे, एज इफ वो ये बोल रहे हैं तू जिद कर रही है ना, ले हम आ गए, पर ये क्लियरिंग तो यही करेंगे. वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन फाइट कर रही हूँ, आप मुझे नहीं दिख सकते, आप कैसे दिखोगे, मैं तो शिव भक्त हूँ. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को अब आप ये कैसे बोलेंगे कि मेरे दिमाग की उपज थी. तो मैम ने जो भी बोला ना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो वो मेरे से मेरी रजा भी नहीं पूछते, कभी कभी खुद बता देते हैं कि तुम चुप बैठो, हम ही डिसाइड करने वाले, तुम शांत रहो, तुम आगे बता रही हो शिव जी करेंगे कि कौन करेगा, तो तुम शांत रहो. तो मैं ये कहती हूँ, वो जैसे मैंने मैम से पूछा था, मैम सब बोलते हैं भगवान जी होते हैं क्या, उन्होंने मुझे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि सोनल इधर मैं कर रही हूँ, उधर कोई और हीलिंग दे रहे हैं, और हम दोनों को सेम चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा हुआ है. तो मैं ऐसे कहानी की तरह सुन लेती हूँ कि पर ये तो मैम का एक्सपीरियंस है, सोनल कैसे मानेगी. तो वो आते हैं बोलते अब बोल चल अब बात कर. माई ब्रदर जब उसको हीलिंग देना शुरू किया, बाप रे मेरे प्राण खा जाता था. वो मैम से तो बहुत प्यार से बात करता था, कैसे बोल सकती है ऐसे, ये कैसे, ये तूने बताया होगा, वो तूने, मैं बोलती तो मुझे पता ही नहीं होता, मैम डिस्कस नहीं करती. सडनली ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक, मैम ने मुझे बोला तेरी लेफ्ट साइड एक पेड़ है जो सूख गया है. वो फोन पर था और उसने ऐसे देखा, उसने बोला सोनल हमारे घर एक नींबू का पेड़ था और वो मर गया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वहां नींबू का पेड़ है और वो मर गया. उसके बाद से मुझसे ज्यादा डेडिकेटेड वो रहता है, यूं ऐसे दंडवत. तो एज फार एज ऑल दीस थिंग, मुझे ऐसा लगता है ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये चेंजेस लाते हैं. अब पहले पहले ना मैं ऐसे हीरोइन बन के सबके साथ शेयर कर लेती थी, अब मुझे पता है भैंस के आगे बीन नहीं बजानी मुझे. तो जहां पर मुझे लगता है ना इनको बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे मेरे कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, मैं वहां ये चीजें नहीं शेयर करती. बट आज वो ऐसी बात हो गई एंड आई वाज लाइक कि यस, अब ये जब वीडियो आगे शेयर होगा, बहुत सारे लोग, मैं अभी भी बता रही हूँ, आज मैं इतनी बात कर रही हूँ, आज से 2 दिन के बाद मैं मैम को बोलूंगी मैम ऐसा हुआ, श्योरिटी क्या है. मैं डाउट करना बंद ही नहीं करती. पता नहीं क्या चीज है मेरे अंदर, वो ये भी रहता है वो भी रहता है, सब होता है, इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं. बट मुझे ऐसा लगता है वो जो एक फाइट है ना, उसका एक अपना फ्लेवर है. वो इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जब आप डाउट करते हो और फिर आपको ऐसा लगता है, फिर मैं 3 दिन तक सोचती रहती हूँ कि पक्की बात है ऐसा था, पक्की बात है ऐसा था. इट हैज इट्स ओन ब्यूटी. सो व्हेन यू फील दैट डिवाइन टच ना, तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं. सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे मेंटोर मिले, अरे इतने सारे इनलाइटेंड लोगों को सुनने का मौका मिलता है. मेरी फुल एनर्जी डाउन, अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे जब शबाना जी ने बोला तुम सेकेंड हाफ लोगी, और मैं सोच रही हूँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, वो कहाँ चला जाता है ऐसे बकर बकर करके, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता. सो इवन एक सेशन इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी. सो इसलिए कहीं ना कहीं आई फील कि वो जब मैं ये टर्न ऑन करती हूँ तो मेरा लाइट अपने आप टर्न ऑन हो जाता है, वो दैट डिवाइन एक्सपीरियंसेस, लाइक वो ऐसे कनेक्शन बैठ जाता है. सो दैट इज व्हाई वो दैट ग्रैटिट्यूड इज वेरी लाइक genuine for me, and I'm really thankful to all of you. thank you so much, and all the blessings to you, Sonal, for sharing all these experiences. ये मैं नहीं करवाती है, वो ऊपर वाला करवाता है. जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी शिद्दत है, शिद्दत से के साथ तुम करती हो.
तभी वो जो है वो तुम्हारे साथ है। वो उन लोग सबके साथ है जो शिद्दत से उसकी भक्ति करते हैं या उनको याद करते हैं और अपने पथ पे निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ भाव से चलते रहते हैं। मैं आप दोनों को बोल रही हूँ, हरमीत को भी बोल रही हूँ, और Yes, ma'am. जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मैं कि कोई बस हम एक चैनल बन जाते हैं और कोई अगर चाहता है तो हमें बिलीव करता है, कोई नहीं चाहता नहीं बिलीव करता है, पर प्रूफ्स एक्सपीरियंसेस के थ्रू होते हैं एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। Miracles do happen. I believe in that, but you have to experience it. जैसे कि सोनल ने कहा, तो सोनल ने एक्सपीरियंस किया तभी उसको विश्वास हुआ। एंड आई थिंक सो, मैं सभी लोगों से कहूंगी जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है वो सब शेयर करें ताकि लोगों को विश्वास हो, हाँ ऐसा होता है और होता है। True, true. मैं तो मतलब just to add one more point and I'm not going to take much time. मैम के साथ ना मेरी जो बातें होती हैं वो गप्पे होती हैं, हम गप्पे मार रहे होते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन। और जो उनका मैजिक है वो तब चल रहा होता है जब मैं उनसे बात नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, उस पर फेथ है, उस पर देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। तो ऑन द फोन वी ओनली टॉक एवरीथिंग अंडर द सन। और अब आजकल मैं थोड़ा कम बोलने लग गया हूँ क्योंकि मैम भी जानती हैं कि बड़ी सारी बातें मैं बोल देता हूँ तो वो ना होने लग जाती हैं। मैं 3 साल पहले बोल दिया था युद्ध हो जाएगा दुनिया में, वो युद्ध की कगार पे आ गए। तो मैंने बोला यार ऐसा है तो तुम ना चुप ही रहो कि तुम कुछ बोलते हो और वो होने लग जाता है। फिर मैं मैम को बोलता हूँ मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। सो आई हैव एक्चुअली बिकम अ लिटिल स्केयर्ड कि यार तू ना चुप ही रह, थोड़ा कम बोल, अपने बारे में बोल, अपने काम के बारे में, दुनिया जहान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बट आई वुड से फॉर हमीद ऑल्सो, हमीद ने इतने प्रिडिक्शंस किए हैं वो ऑन द डॉट बिल्कुल बैंग ऑन हो। Wow. But it is all divine blessing that he gets to know those predictions beforehand and many years before. If you go on his Twitter account, you will see all the, it is all relatable. कि उस समय कहा था और आज ये हो गया। So he's also मैं blessed. पॉलिटिकल वो नहीं करना चाहता। मैं एक ना No मेरे politics. नहीं I just mentioned Twitter नहीं account. मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने ना 2012 में, उस टाइम तो मेरी कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसी शुरू नहीं हुई थी, इट स्टार्टेड बट नॉट। तो मैंने लिख दिया कि एक दिन की कांग्रेस नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री एंड वन लीडर नीड्स टू कम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी चेंज्ड। अब मैं बैठ के देख रहा हूँ कि 2023 में वहीं पे हम आ गए कगार पे। तो मैं बोला यार तूने लिखा क्यों था? एंड आई एक्चुअली प्रोफाउंडली रोट दैट हाँ, तो it was the need and of the I hour. True, today and in fact I started telling Nupur ma'am I think a good 2 years back that we are moving in that direction. And today when I sit back and I have a more logical mind, वो ना एक emotional वो था. It was a this. I'm just making an example. Today when I look and I say, okay, no, what I said might have come as a divine thing from me, but the logic which I was supporting maybe not the logic I support today. तो but अब मैं वो सोच समझ के लिखता हूँ। लिखना बिंदास चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, सुबह उठूंगा मेरे को अगर बोलना है वो तो कोई भगवान भी आगे नहीं रोक सकता, वो मैंने बोलना ही बोलना है। तभी तो मैं कह रही हूँ। बड़ी बार ऐसा हुआ है। जब ये होना होगा तो वो वैसे भी for that moment you won't think and you'll go ahead. नहीं, लास्ट वीक मेरी और मैम की कोई बात हुई तो मैम ने ना मुझे एक मैसेज डाला, टेक इट इजी, मतलब कि ये वाला काम मतलब ऐसे मत करना। मैं ओके मैंने बोला नहीं, मैं नुपुर मैम की बात नहीं मान सकता इसमें, और हम करेंगे क्या, हम इसको टोन डाउन कर देंगे। तो प्रचंड रूप नहीं दिखाऊंगा किसी को, पर रूप जरूर दिखाऊंगा। और दिखाया, और मैंने लिखा, मैंने मैम आपका मैसेज आ गया, तो मैंने प्रचंड रूप नहीं दिखाया बट मैं थोड़ा बहुत ना रूप दिखा के आ गया। तो मैंने वो जरूरी था, नहीं तो मेरे को रात को नींद नहीं आती। दैट इज माई डीएनए, तो करा नहीं जा सकता कुछ भी। और एक लास्ट मीनू जी मैं आपसे वो गुजारिश करूँ, मैंने एक और बहुत बढ़िया चीज सुनी और मैं वो इम्बाइब करने वाला हूँ, एंड आई एम जस्ट लीविंग इट ऑन द फोरम।
because we 15 days has been a journey of light and so एक बहुत बढ़िया बात है कि 3 महीने ना एक्सपेरिमेंट करके देखो कि बिना कोई कारण के खुश हो। हर रोज सुबह उठ के बोलो कि बस कोई कारण नहीं, बस खुश हूं मैं। तो अगर जबरदस्ती नहीं भी हो रहा, जबरदस्ती खुश हूं हर रोज, 3 महीने बाद आप रियलाइज करोगे आपको कि कारण ही नहीं चाहिए खुश होने का, बिकॉज इट एक्चुअली बिकम्स अ मैनिफेस्टेशन कि आप बेफजूल किसी भी कारण के, कि पैसा आया नहीं, गाड़ी आई नहीं, ये नहीं आया, कोई कारण नहीं, आप खुश हैं। आई एक्चुअली वाज वेरी प्रोफाउंडली, मैंने उस चीज को सुना है, आई सेड, ओह, यू नो, दिस इज नॉट बैड, while it is something we know it, but sometimes जो हमारे सामने चीज होती है, हमें पता होती है, हम उसको इम्बाइब नहीं कर पाते। So true. That's it. Really Thank you so profound thought. much. Thank you so much for sharing that. So Thank that you, is a Vinny. very interesting discussion from all of you. And since it's the last day, I would like to invite Dr. Nupur also to give something to everyone which we can do on a daily basis. कुछ creativity, कुछ celebration कैसे कर सकते हैं हम with light? Something wow. we can do on a daily basis. सेलिब्रेशन का कोई वो थोड़ी ना होता है, One, Harmit रीजन नहीं has होता है, given us, सेलिब्रेशन तो Harmit has हर दिन होता है। तो आपसे भी कुछ Celebration- क्रिएटिविटी मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सेलिब्रेशन का विजुअल बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, Okay. तब मजा आएगा सेलिब्रेशन का। सबसे पहले तो इस बात पे सेलिब्रेट करो कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। Yes. क्या बात है, congratulations. Something to celebrate. Yeah, that's a celebration part. ये है सेलिब्रेशन, Yes. इसको कहते हैं Wow. सेलिब्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, ये Mavin तो के हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा And, मैम, आपने मेरा बैकग्राउंड देखा? मैंने चुन के ढूंढा है, बैकग्राउंड दिख रहा है आपको मेरा? मैं देख रही थी, कल से देख रही थी। वो ऊपर से लाइट आ रही है, बंदे में जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि लाइट उससे ऊपर जा रही है कि ऊपर वाले से नीचे आ रही है। मैं बड़ी ये मतलब चुन के तुम्हारे तक आ रही है, उसमें देखो मेरे वो आदमी खड़ा है। ये मिल गया मेरे को। It was with the theme. It was the theme of the 15 days. Wow. Wow, Sheila, you're amazing, muted. amazing. You're So muted. let's talk about Okay, celebration. Yeah. अगर हम इसको तो मैं ऐसे थोड़ा सा कहें, बताती हूँ, कुछ अच्छी हाँ। बातें, ओके, कुछ प्यार की बातें, कुछ सेलिब्रेशन की बातें। तो सेलिब्रेटिंग डिवाइन लाइट इज अ सिम्फनी ऑफ जॉय एंड कनेक्शन। जब आप खुश होते हो ना, तो आप खुदा से कनेक्ट होते हो, आप गॉड से कनेक्ट होते हो, आप हायर बीइंग से कनेक्ट होते हो। दुख में कहते हैं ना, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। कबीर का ये दोहा है। तो आपको सुख में भी सुमिरन करना चाहिए, तभी आप खुदा से कनेक्ट। So there's a magic in the air, Right. a feeling of happiness that whispers of something extraordinary. We gather not just to mark a date, but to celebrate the very essence of existence of divine light. See the sparks. So this is celebrated not of pomp and circumstances, but of open hearts. We speak our hearts out and radiant souls. All the participants out here and around the world, they have radiant souls. We come together to bask in the glow of universal energy. This is all universal energy. Light is everywhere. Divine light is in everyone. That binds us all in a luminous thread woven through all over the world. As I visualize, I see all the beings, living beings, whether small, whether big, they are all connected with the divine light, thin thread of divine light. The tapestry of light, as you see behind me, they are dancing flames, twinkling lanterns, and so many sparks in the space, reflecting the inner radiance of each one of us and each one who have participated in this program, in this festival. Then there were melodious people, also melodies of divine. They have,
sung the poem. They have recited the poem, chanting, and so many soulful songs. Those who were still, we can hear them harmonizing with the rhythm of cosmos. Now prayers. Many people do yoga flows, ecstasy, and dancing and meditative stillness, each a unique expression of gratitude for the divine spark within. And there, outside, behind me, not many sparks are there. Now sharing stories of divine touch. Of course, we were sharing all those stories just now. All those testimonies and moments of inspiration weave a tapestry of shared experience, reminding us of immensity and intimacy of divine light and intimacy with divine light. That is what it is all about. A feast for the soul, wholesome food nourish our body, reflecting the bounty of earth and the generosity of universe. But the main food is the divine light, that spark. When you touch the divine light and you get all of the energy that you need for the lifetime, even a small spark is enough. I will tell you one more thing about this. There was one saint who recently left his body. He was not eating anything. And do you know the reason for that? He was doing one particular yoga technique with which he used to take the divine nectar. And that is in Reiki also, we say it is like touching the palate, but it is more than touching the palate with your tongue. And there rests the divine nectar. If you continuously take in that nectar, you will definitely be able to survive without eating or drinking. Like Harmeet is surviving on water fasting. This saint, on him, there were a lot of researches has been done, but yes, he survived without eating and drinking. I'm forgetting the name, but yes, I remembered all of a sudden. This celebration is for every seeker, every dreamer, every heart awakened to call of light. It's for those who yearn to connect with the divine essence within. It's all inside you and all outside you. See behind me, and you will know all those sparks. Express your gratitude for the gift of life in all its form. Share joy, love, inspiration with like-minded community like Mavin Global Learning and Training Platform. It is really very inspiring to be with Mavin. I'm really grateful for Mavin. Open your heart to the transformative power of divine light. And yes, you have. You just have to touch base and you are connected to the divine light. So bring your brightest light. Come again. And today we are part of celebration and you have to be celebrating this light. And your unique gift is to share what all you have experienced over these 13 days and 14 days. Just share it. That is very important. And that is what your contribution adds to the symphony of celebration. Open your heart, be present, be receptive. Let the energy of divine light come through you. You have to connect. Allow yourself to be touched by divine light flowing within and around you, just like this spark. You just have to touch it and you are connected. So share your stories
offer kind words, let the spirit of our community grow bigger and blossom. We are interconnected in the dance of divine light. You can see it behind me. They are dancing and dancing and dancing. This is not just a celebration. It is a declaration of power of light to heal, inspire, and transform. It is a reminder that we are not alone, that we are all part of something bigger and brighter than ourselves. Let's join hands, raise our voices, celebrate divine light within us and around us. And this is what I want you all to do. Just connect with each other, and you will never regret connecting to the divine. Medium can be anywhere. Anyone can be medium, but you have to really realize yourself, what you really want in your life. You can do your worldly affairs and yet being connected to divine light. This is what is real essence of life, the light, the divine light. And this is the celebration. And we are going to embark on a new journey from tomorrow. Let's celebrate the conclusion and the new beginning. Thank you very much. Wow. Beautiful energy, Nuparji. Beautiful. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you so much. So we have a final speaker of our whole series, our whole festival, and she was a little late in joining us, but welcome, Vanita ji, now. So this Thank is you. Vanita Keswani, and she's connected to the corporate world, being the CEO of Madison Media Sigma unit in Mumbai. And she has been awarded among the top 50 most influential women in advertising and marketing by Impact Magazine this year. And she also worked with the Times of India group earlier. Personally, as part of her spiritual journey, she practices Buddhism, Tao, healing, and transformation. And her philosophy is contained in her own words. We all share a connected field, and I am helping people discover their connections and lead a happier, healthier life. So she loves to share the soul wisdom practices and healing techniques that Master Shah has given to her. So I invite her now. Vanita ji, please Thank give your you. final touch to the whole festival. Thank you. Thank you so much. Sorry for the delay, but this is so beautiful just coming back and listening to Nupurji's beautiful words. And I had not planned exactly what I'm going to speak or do, but what she said is what we are going to do straight away. So Master Shah believes in practicing more than wisdom, just sharing, knowledge. It's more about practice. So I invite everyone to just straight away go. A beautiful field is already there. Just sit up straight, close your eyes. And I'm going to just lead you all to say something which you will also say, which was exactly what Nupurji said, actually. So it's a practice that we do usually. Close your eyes, everyone. Sit up straight and focus on your first chakra. Visualize a light ball in your first chakra. And just listen to me the first time, and then you can repeat it aloud as well. I am inside the divine light field. Repeat. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. Repeat. The divine light field is inside me. We'll keep on saying this. Visualize light within you, like Nupurji said, and light around you. It's all a field. We're all a vibrational field, and we're all quantum entangled with each other. Let us visualize golden rainbow crystal light within us, around us,
as a beautiful field, and keep repeating this as we have no thoughts. Replace all thoughts with one mantra. That's what we will do. And if we focus and we keep saying this and we meld with the divine light, we will experience something very beautiful. Our whole body can become a transparent light body. So let us start now. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. So our teacher, Master Shah, teaches us that we should chant aloud, which is the yang method of chanting, and then we should chant silently, which is the yin method of chanting. And everything in the universe has a yin and a yang. And when we do the chanting of yin and yang, then different vibrations in our body, which are smaller versus larger spaces in our body, get vibrated. So we just did a few rounds of aloud. Now I will hum it very softly to just anchor everyone here. Continue to be in the same condition. And now just don't speak aloud. Speak this in your heart as you anchor with me together. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me.
aloud again. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. A deep breath one last time. I am inside the divine light field. The divine light field is inside me. Oh, thank you, thank you, thank you. Massage your hands, your face, and open a big, big, big smile and celebration time. So, anyone would like to post or share? Please share. How was it? Did you feel the light? The background was set already by Nupuji, so all I had to do was say it aloud, and with, of course, the yin and the yang method. Totally divine. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, and the other thing that I got inspired with was she said, actually, today was just inspiration from her own words. And she said something about Khuda. I don't exactly know what. And the moment she said, like, you know, connect with the light, with whether it's Khuda or whether it's this or that, she mentioned like that. And I can't stop but sing these lines, which is actually beautiful song, which is my ringtone actually on my phone. So let's all celebrate. Whoever knows the song can sing with me. Okay. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. One more time, everyone. Whoever did not even know will know now. It's such a simple words, right? Let's all sing. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है. इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. How was it? Nice. Wonderful. That really set the tone for a beautiful finale. Thank you so much, Anita Thank ji. you. Yes. Yeah. Thank It's you very much, celebration. I ma'am. said the last time. On that note, where is Shabana ji? She's gone wishing. Shabana ji, yes, please. Yes. I want you to say a few words. Please come on. We need you here, Shabana. Yeah. Yes. Yay. Uh, So it's What all to about do? creating and celebrating today. So Yes. you put your thoughts also in on that. so I think what else to add? Like nothing else to much to add. I have been learning along with so many, all of you, and those people who are watching on YouTube as well.
So I think it has been a fabulous journey about light. So in 14 days, we have discovered so many things, and all which has come. Oh, the one thing which has repeatedly come, that is like we are all light, right? And the universe is full of light, whether it is day or night. Light is always there. So we have learned to see light, be light, reflect, and reflect. Sandeep ji has been asking us to do everyday reflection. And Minuji created so beautifully the reflection part of it. And the reading light with tarot, with Nupurji and Mansi, and also with planets, what the Malvita did. And in the end, we also learned how to create and manifest with light. That was, and I like the short form that we learned, that is manifest, and that is actually celebration, right? So when we are light, and we don't have to be, actually, we have to just get to be aware of who we are, that is light. And when we celebrate ourselves, that is when we truly flourish. And that is what I think the ultimate purpose of light as well. And that is what we are doing today. So we are celebrating light, we are celebrating ourselves and what we are creating. And I'm so amazed what all Sonal created, Harmeet created today. It was awesome. And Nupurji, of course, and Vanita ji. Can't thank you enough. And Meenu ji, and Sandeep ji, and Sheetal ji. Also the candle magic that we learn, and the crystals. It is all like light is everywhere. It's just like, often we close and we forget and we doubt. That is when we stop being light. But that is, I think, also is essential. What we learn, like, so we have to embrace our shadows. And of course, so I would like to, and like where we started, right? So light is the source, and light is the path, and light is you. So be the light. Let's just be and appreciate our lightness more. And that is what is happiness and flourishment. So thank you so much. I don't want to add anything more, but just enjoy along with you the whole 14 days journey. Initially, we thought it would be difficult, but it all went so smoothly. Thanks to Minuji and Nupurji. So can't pay more gratitude. So thank you. Thank you, Shivanani. Thank you so much. Thank you, Shabana. So we'll come to the last part of it. So now it's over to Sandeep ji. So there is no reflection today. I want you to encourage the people to come out with their thoughts, what they thought of the journey. So I'll hand over to you now. You can encourage and then give the vote of thanks. Because without Sandeep ji, ये journey नहीं हो पाती थी. उनकी presence यहाँ पे has been like the backbone of the whole season, you could say. Thank you so much. Thank you so much, Minuji, Shabana ji, Nupur ji, everyone, each and everyone here present, and wonderful journey of these 14 days, right? And I won't say we are ending it. We are concluding it, as Nupurji said, and it's a new beginning for most of us. In fact, all of us, right? So let us. If I talk about the reflection part of it, every day I enjoyed every bit of it, right? And reflection तो बनता ही है, हमेशा करना ही है, right? और ये reflection वाली journey आपकी हमारी खत्म होने वाली नहीं है, right? And अगर ये reflection वाली journey खत्म हो जाएगी तो फिर I think we will be बहुत demotivate हो जाएंगे. तो reflect करते रहिए. That is the light is always reflecting. Refracting और reflecting की बात की थी हमने, है ना? So I will also add something on this thing as far as today's reflection is concerned. मेरे ख्याल से मीनू जी ने मुझे कहा कि reflection का day नहीं है, तो लेकिन मैं 2 minute लूंगा उस पे. Right. Everybody, I want everyone to share their experience. That is given, right? But मेरा ये कहना है कि how does the light inspire you? Since we are celebrating, so let's reflect. How does light inspire you? So आप कभी छत पे जाओ, ब्यूटीफुल स्टार्स को देखो. आपने अभी क्या होता है कि हम कभी छत पे जाते नहीं हैं, इतना बिजी हैं हम लोग, आते हैं डेली रूटीन्स में, हम ये रहते हैं, राइट? सो मेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ. छत पे जाओ, अपनी सिटी को देखो ऊपर से छत पे, जो भी दिखता है आपको, लाइट्स दिखेंगी रात को,
वो लाइट्स पे देखो आप कि वो कैसा नजारा होता है, एवन एक्सपीरियंस करो आप उसको, कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट आप करोगे कि व्हाट इज द लाइट इनसाइड यू, राइट? तो वो आपको रिलेट कर पाओगे. सो दैट इज माई एक्सपीरियंस. मैं कभी कभी करता हूँ, ऑल्दो कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल सराउंडिंग्स में या बाहर जब जाते हैं तो खुले आकाश में रात को देखूं, खुले आकाश को कि कैसा लगता है ना? दिन में तो कभी हम देखते नहीं है, वो भी हमने डिस्कस किया था इसमें, सनलाइट और इसके बारे में बात की थी. सो आई वुड इनवाइट ईच वन ऑफ यू, ये 13-14 दिनों की जो जर्नी रही है, सभी लोग अनम्यूट करें एक एक करके एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर यू फेल्ट, कैसा लगा, क्या टेक अवेज हैं, कहाँ पे ऐसे लगा कि मतलब दैट इज द आहा मोमेंट, दैट इज द आहा बल्ब मोमेंट, राइट? So let us listen from you guys. Anyone can unmute and share. Anyone? I'd love to come in, but I'm waiting for somebody else to come in. तो सब बोलेंगे हरमीत सबसे पहले मुंह खोल We'll देता have to do a roll call. Then they'll come forward. One by one. नहीं, it was really wonderful. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्यादा कुछ. एक्चुअली मीनू जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए. मैं मैम से पहले भी बोला था, पहले भी मैसेज डाला कि मैम एक सागर है बहुत बड़ा, और मुझे लगता है मेरा तो सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ नॉलेज है इसके अंदर. मतलब सन गेजिंग वाज वेरी ऑसम. मैंने किया उसको बहुत बार, 2-3 बार किया, एंड आई कुड फील दैट एनर्जी. और हर रोज कुछ ना कुछ नॉलेज में ऐड ही हो रहा है. चाहे निपुर मैम बोल रही हैं, चाहे मीना मैम बोल रही है, इवन हरमीत जी भी जो कुछ बोलते हैं उसमें से आधे सारे क्वेश्चंस हमारे ही होते हैं. हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि उनके क्वेश्चंस हो गए, हमें आंसर्स मिल जाएंगे. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. शीतल जी, संदीप जी, थैंक यू एवरीवन. दिस वाज वेरी वंडरफुल. बहुत अच्छा, पहली बार ज्वाइन किया, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हर बार आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. Thank you, Shavana ma'am. Thank you, everyone. Great to listen your experience and sharing. Anybody else? Let's hear from some other people. Okay, can I Okay, say I'm going. something? Yeah, go ahead. Yeah, Go ahead. please, Yeah, please no, go ahead. please, Please go ahead. sorry, I'll go after you. It's okay. Anyone, Anyone? please go ahead. शीतल, Please, आप पहले. आप आप करो, पहले. since you are. आप पहले. Thank you. आप जो कह रहे थे ना हरमीत जी कि लाइट ऊपर से आ रही है कि यहाँ से ऊपर जा रही है, आई डोंट नो. I wanted to put a little नहीं, statement there. मैंने ये नहीं बोला I don't know. I said it's a beautiful thing to Okay. envision कि ऊपर से आ रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों मिल Okay. रही हैं. Okay. Yeah, दोनों मिल रही हैं, right. So मैं यही सोच रही थी, जो मुझे लगा वो ये था कि it's all interplay of light. ठीक है, हम लोग तो बस बीच में आ गए, बस. We just landed in between and we felt that light. Light is always there. This interplay goes on eternal. है ना? And like Sandeep ji said, कि आप छत पे जाओ and feel the light of the universe. So what my take on this is, whenever you feel like your light is dimming, the inside thing, like it happens, we all feel low at times. It's natural, है ना? जितने भी हम healers हो जाए, teachers, trainers हो जाए, कुछ भी, we all have those little phases in our life. तो जब भी अपनी light dim लगे ना, go on the top and connect with that light. Wonderful. तो आप अपने आप rejuvenate हो जाते हो. It's my experience. All the time I do it. I do it with sun, I do it with moon, I do it with stars, even I do it with clouds. कुछ नहीं दिखे तो खाली sky, but yes, you are there. So just connect and it all puts you back to the light. Wonderful sharing. Great. Amazing. एंड आप छत के बजाय पार्क में भी जा सकते हो. कहीं भी जा सकते हो. हाँ ओपन जी. छत मैंने इसलिए बोला कि वो जो ऊपर रहता है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर छत पे ज्यादा आसानी से चले जाएगा. छत पे जी ने लाइट बिल्कुल दिखती ठीक है बोला. ना, मैं हर नीचे साल से. करवा चौथ वाले दिन पार्क में जाता हूँ छत देखने ऊपर से. मून देखने के लिए. See, it's all about nature. Any form of nature, connect with that. You will really feel wonderful. Yes. Any form of nature. Great.
Hanji, next who's sharing? And one more thing, a Hmm. big thanks to Minudi to like bringing me in here, because yes, I was not ready in the beginning, honestly, but then she was like, "You have to come." So it's all like really grateful to Minudi for bringing me here. Pushing, not bringing, Pushing. pushing. Okay, I'll put it like that. Pushing. Whatever you say. Okay, so Thank you, Sandeep ji, Meenakshi, for pushing. I'll come in over here. Yeah, please. I want to thank each one of you on the forum, and I want to thank Shabnan ji for putting this whole effort to put this up. Meenu ji with her radiant smile every day when she's on the screen. We know we are off at 9 sharp, and without a doubt, I wouldn't be here if Nupur ma'am wasn't the catalyst for me. And for me personally, these 2 weeks was about hearing things which I'm not aware of, listening to it, getting a new perspective, and also, I tend to look at people. I like to evaluate people. तो अलग-अलग लोग हैं इस फोरम पे, तो उनको स्टडी करना, उनकी बात सुनना. So you walk away a little more learned than you were. It might not be a subject which is directly touching your life or heart, but you anything which end of the day gives you a little more perspective and insight into life is made you a little more learned. And I would simply say, from a light perspective, to add in, कि जब हम ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, अगर बल्ब 2-3 लगा दें तो वो बल्ब होते हैं, पर अगर शैंडलियर लगा दें तो वो बहुत सुंदर लगता है. तो लाइट है. तो मेरे ख्याल से मेविन मैजिक का तो ये फोरम है, इज लाइक अ शैंडलियर. ईच वन हैज इट्स ओन लाइट, and it becomes a glowing chandelier which lights up the room and also looks very beautiful. But thank you, everybody. Wonderful, wonderful. Thanks for being here and sharing your insights. So every day, you've been a part of this, and we sincerely thank you for your efforts being here. Pleasure, sir. All right. Okay, Sonal, you want to say something? Sonal is there? मैं तो कंट्रोल करती हूँ खुद को. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए सोचती हूँ सब बोल ले, फिर अगर हुआ तो आई विल स्पीक. तो मैं तो इतने कंट्रोल कर रही थी. वन थिंग आई विल से, आपने बोला आहा मोमेंट. मेरे लिए तो ना सर हर स्टेज पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फेस्टिवल था, इसके पहले एक फेस्टिवल हुआ, उससे पहले हमने विमेंस डे वाला किया, फिर कॉन्शियसली पॉजिटिव के सारे सेशंस होते हैं. और मैं हर बार सोचती हूँ इस चीज पर और कोई क्या बोल सकता है. सो ओके, ये सीजन हमने किया, ये फेस्टिवल हुआ, एंड हमको सारा ज्ञान मिल गया, बिकॉज सब लोग अलग अलग टॉपिक पे बोल रहे हैं. या बट सीरियसली, इवन इफ द टॉपिक इज सिमिलर, अब जैसे हमने इस बार लाइट रखा, पिछली बार कुछ और, थीम अलग अलग होती है, बट इट इज लाइक, बट एवरी टाइम व्हेन आई एम हियर, वो बोलते हैं ना कि आप अपने घर पे गीता रखो और आपके दिमाग में जो भी चीज है आप वो उठाकर पढ़ोगे, यू गेट द आंसर. Right. So seriously, whenever I attend all these sessions, मुझे ऐसा लगता है कि सब वो मिलता ही जाता है, एंड मुझे ऐसा लगता है यार इससे ज्यादा और क्या होगा. बट देन आई मीन आई गेट सो मच, मुझे वो इधर कम हो जाती है जगह फॉर ऑल दैट. बट मुझे इतना जरूर समझ आता है, फॉर सम रीजन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड, I get all the answers here, I get all the solutions here. For me, Mavin is, it's a book, it is an institution, it is the university, and then you all have different personalities. जैसे अभी हरमित ने भी बोला, मीनू जी की ना एक फिक्स स्माइल है. Oh, that how she maintains that smile throughout, my God, वो 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, 2 घंटे चले, पता नहीं कैसे. And that is like similarly नूपुर मैम की आवाज में हीलिंग है. मेरी छोड़ दो, मेरे फादर बोलते हैं, उनसे बात ही कर लो ना, वो कुछ भी बोले, वो बोलते हैं, वो इतना इंग्लिश में बोलती, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, पर अच्छा लग जाता है मुझे. दैट वे सिमिलरली यू हैव दैट लाफ्टर. आपको आप वो जो एक ठहाका लेकर हंसते हैं, तो ऐसा लगता है हाय हाय. सो ऑल यू हैव, सो वो जो एक रेनबो के डिफरेंट शेड्स होते हैं, एंड देन हरमीत इज लाइक ही, वो मैं जब सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है, पहली बार एक वो ईर्षा वाली फीलिंग तो यहाँ भी आई थी जब मैंने फोन में मैम को तारीफ की. मुझे लगा कौन है ये कि मैम इतनी तारीफ कर रही है और मुझे बोल रही सुनो. बट देन व्हेन नॉलेज स्पीक्स, आप सबको सब चुप करा देते हैं. सिमिलरली ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई विल से
सारे अपना वो, एंड देन ना शबाना जी का आपने, आई डोंट नो है किसी ने कभी नोट, शबाना जी हमेशा उनके एक रेडियंस निकलती है, मैंने उनको पहले भी बोला है ये, आप Yes. क्यों नहीं आते हो स्क्रीन पे, क्यों नहीं आते हो, वो बहुत ऐसे लाइट आता है उनके फेस से, तो ऑलरेडी है ही, पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है, एंड देन अगेन शी कम्स विद दिस वार्मथ, वो ना एक, एक्चुअली शी इज द एंकर ऑफ मेविन, वो ऐसे सबको ऐसे होल्ड करती है, तो मुझे ना जब मैं कोई भी ऐसा फेस्टिवल अटेंड करती हूँ, सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट्स, आई रियली फील दैट सब अपनी एक अलग रेडिएशन के साथ, एक अलग वाइब्रेशन के साथ और अपनी लाइट के साथ आते हैं, तो वो जो एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, सो अगेन आई विल से आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ यू. Great to hear that. Amazing. Great one. और कोई शेयर करना चाहेगा? अरुण जी, you are there. If you are there, you are listening to us. He's not responding. Anyway, all right. It's great to hear these experiences and insights. So it's now I move ahead. मीनू जी रह गई हैं. मीनू जी, हाँ मीनू जी. मैं तो हूँ यहीं पर, मैं हाँ, कहीं नहीं गई. You're sharing. My sharing is, of course, it's like for me also, it's been a great learning process because there is always space for more knowledge to come in. तो हर चीज जो है हर एंगल से समझने की, तो वो है ना रिफ्रैक्शन वाली चीज, वही हो रही थी यहाँ पे, हर एंगल से नई नई चीजें समझ आ रही थी. तो it has been an awesome journey for me also. So I always look forward for 9 o'clock. अच्छा ठीक है, and I think we're going to miss it from tomorrow onwards. Yes, 9 yes. o'clock हो रहा है. Right. इनफैक्ट मैं सिंस वो आज के सेशन की शुरुआत में ही मैं बोल रहा था कि वो हम मिस करेंगे कि 9 o'clock हो गए, अभी हो तक गया. रिमाइंडर नहीं आया या ग्रुप में नहीं आया, मैसेज नहीं आया. So we'll miss that. Absolutely. We're going to And miss that. definitely Shabana ji is the anchor of it all, and without her, none of these things would have been possible, and the Right. Mavin group wouldn't have been possible. Yes, Absolutely. Nupur ji, you want to add something? अनूपुर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would like to say something. Yes, please. Especially आपके लिए मैं कहना चाहूंगी Oh. संदीप जी. You are always there and you are integral part of Mavin. Thank you so And much. yes, without you, this festival would not have been possible, so successful. I'm Yes. so privileged. I'm so privileged. And yes, Meenu ji, you were there. Shabana was already सबको मैनेज करने में लगी रहती Push थी, करने में, पुश encourage करने में, में. सबको बुलाने में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और सबको सारा फ्लायर वगैरह वही बनाती थी. Then all the participants, Harmeet always present. Yes. आ जाओ Harmeet, please come. Both He of will be them, always Sandeep there. ji and Harmeet, have been the backbone of the whole festival. Yes. And Sonal, And of yes, course, जब भी we are मैं कहती forgetting Dr. Sonal आ Nupur. जाओ. All those creatives, Yes. those videos, everything Nupur ji has created amazingly. So like, Yes. Oh, like वो तो become a मेरा master of AI, I think now. Yes. Great. ऐसा होता है कि जमाने के साथ चलना चाहिए. अब Yes. AI जब आ गया है तो हमें भी साथ में चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे बाबा आदम के जमाने में. फिर खुदा हमसे बुला करके पूछेगा कि भाई क्या तुम सीख नीचे के ही आए? रहो, वापस ऊपर बताना. People wants to add वो something. सीख के आओ, मुझे भी सिखाओ. I really appreciate each one of you. सब लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया, सोनल ने भी बहुत अच्छा हमारे को साथ दिया, वनीता बहुत जी ही, बिल्कुल. अमेजिंग. Her presence has And, always lighted up the screen. Yes, yes. उनकी आवाज में जादू है, और बिना उनके हमारा सेशन पूरा नहीं होता. तो हम तो चाहते हैं बार बार आपको हम सुनते रहें और हमारे दिल में रियली Yes. जब आप गा रहे थे, पर जब आपने लो वॉइस करी ना, एकदम जैसे दिल में सारा कुछ उतर गया. इतना प्रेम से आपने अपनी वाइब्रेशंस भेजी. Really Thank you so amazing. much. Thank you. And Ji. Thank you for दीप्ति ने calling. बहुत अच्छा बोला. आई वुड लाइक दीप्ति आप बार बार आए. और थैंक यू मैम. शीतल, oh my God, you are so amazing. इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने अच्छे से ध्यान से सुन करके उसको एनालाइज करना और उस पे
कुछ ना कुछ कहना, and then you absorb many things and you gave your inputs also. And again, I would say, Thank you so much. yes, Arun ji was always there. Veena ji, you were always there, giving us all the support and everything. Shabana to क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती. हमारा ये मेविन है ना, बिल्कुल ऐसे फूल के गुलदस्ते की तरह. किसी ने मुझे बताया था कि सब तरह के फ्लावर्स है इसमें. कुछ कांटों वाले भी हैं, कुछ बहुत ही कोमल है, कुछ खुशबू वाले हैं, सब तरह के. और सबको जोड़ के रखना शबाना का काम है. वंडरफुल जॉब, वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू सो मच. Thank you. शीतल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड. मैं एक्चुअली आपको ही कहना चाह रही थी. I wanted to say कि आप रोज सबसे रिफ्लेक्शन आप देते हो. You ask people to reflect. आज आप इस पूरे सेशन के रिफ्लेक्शन कंक्लूड करो 2 लाइंस में. 2 लाइंस में. 2 लाइंस में, because one would not be enough. अच्छा. मुझे तो जो समझ में आया जब ये प्लान कर रहे थे अब ये स्पिरिचुअल फेस्टिवल इनिशियली, और आज की डेट में जब हम बैठे हैं, तो अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं पूरी जर्नी को, इन 14 दिनों की जर्नी को, तो एक ये चीज मुझे समझ में आई है कि नो, सेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ. एवरी मोमेंट यू नीड टू सेलिब्रेट. हमारे नो डाउट योर नेगेटिव थिंग्स विल कम, नेगेटिव थिंकिंग में आप चले जाओगे, बट हाउ फास्ट यू कैन बाउंस बैक. एक तो ये मुझे समझ में आया. एंड जब हम लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले बी आवर ओन लाइट. हम वो कहते हैं ना, जब एरोप्लेन चलता है तो वो केबिन क्रू आता है, उसमें बोलता है कि वो पहले आप ऑक्सीजन कैसे लगाते हैं वो सीखिए, तभी आप पहले वो सीखेंगे, तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे. राइट. सो बी योर ओन लाइट फर्स्ट टू इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स. सो जब निपुण मैम ने बात की लाइट वर्कर्स की या लाइट बीइंग्स की, तो नो, मुझे ये बात समझ में आई. सो सेलिब्रेशन इज वन थिंग एंड बी योर ओन लाइट इज सेकंड वन, जो आपने 2 वर्ड्स में बोला था. एंड अगर इसी पे हम काम कर ले, इसी पे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते रहे, तो आई थिंक नो, हमारा पर्पस जो हम जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सो वी विल बी क्लोजर टू दैट. सो दैट्स व्हाट आई रिफ्लेक्ट ऑन इन 13-14 days. Great. So see, 1 line would not have been enough. बिल्कुल. मैंने ये बात सीखी थी कैंडल से. अगर आपको किसी को दूसरे को लाइट देनी है, बिकॉज होता क्या है, आप दूसरे को दुखी देख के यू फील लाइक कि कैसे हेल्प करूं, राइट? राइट. तो अगर आपको दूसरे को हेल्प करनी है ना, तो उसके लिए पहले खुद जलना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ कैंडल. ओनली देन यू कैन फाइट दैट डार्कनेस. उसके बिना यू कैन नॉट फाइट. Absolutely, absolutely. Great. So Thank you Shabana so has much. been the candle for all of us, and Yes. she's pushed us, encouraged us to understand more about light. And that has taken us on this awesome journey of 15 days. So we've Yes. learned a lot. And from all of us, from all the participants, from the trainers, really, as Nupurji was saying, a bouquet of flowers the sare, and बिल्कुल. alag-alag fragrance आई है सबसे हमारे पास. Absolutely. So I think anything else anyone would like to say? Otherwise, it's already 45, so we to conclude also. Before we end, I'll just make a request कि next वाला जो spiritual से हम festival plan करें, तो let's put in our efforts. Let's say अगर हम इसको physical कर पाएं, कोशिश करते हैं इसको physical कर पाएं, और थोड़े सा बड़े लेवल पे और लेके जा पाएं, where we can rope in. We have good trainers, facilitators and moderators, you know, Shabana ji. तो थोड़ा सा इसको brainstorm करके, little bit more push-ups, थोड़ा effort और लगा के, let's make it little bigger, and so that now. So be it. So be it. How Yes. much better can it get? Yes, Let's start yes. doing that. How much better Yes. can it get? Yeah, only Nupurji, Sonal, and Vanita ji, and all those people who are not in Delhi, they have to book the flight. So Yes. please book. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि wherever we are, अगर हम इसको एडवांस में प्लान करते हैं, let's say इस तरह से प्लान करते हैं कि everybody can be here and create that bundle of energy together. वो just imagine, just visualize that event. मैं तो visualize कर रहा हूँ. मैनिफेस्ट हो जाएगा फिर. हाँ, मैं ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज हमने करनी है. Manifesting with the speed of light. Yes, that's what Yes. you've learned. So that's what you Yes. have to manifest now. Yes. So let's make it happen. Let's make The it happen. universe is listening. Yes, wherever we are,
wherever we are, वो सब हो जाएंगे, सब अरेंजमेंट हो जाएंगे, सब फ्लाइट्स बुक हो जाएंगी, स्पेसेस बुक हो जाएंगे, हॉल्स बुक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा. Yes. Stage is So also we are joining hands to have a physical event Yes. very soon. Yes. Yes, yes, Yes. yes. And with all the energy, with all the input, with all the support of everyone out here, definitely we are going to make it. Yes. Yes, yes. Right? I think we'll conclude on that note and keep We will manifesting not. throughout the We night will, and throughout the days. we will conclude not before I acknowledge everybody, Okay, fine. including Yes, please. trainers. I'll take each name, everyone's name here, who've been present, जिन्होंने time निकाला है और जिन्होंने पूरा हमें support किया है इस पूरी journey में. So I acknowledge each and everyone, all the trainers and mentors and facilitators. So starting from हमारा सेशन 1 जब से स्टार्ट हुआ और अभी तक जो भी ट्रेनर्स आए हैं हमारे फोरम पे, तो जया भारती जी, मीना आनंद जी, शीतल खुराना जी, डॉक्टर नुपुर यू, एंड डॉक्टर मनीषा जैन, डॉक्टर देबाशिष मलिक, अमित दोलावत, wonderful session that was, and Konto Shivo, and Pooja Agarwal, Dr. Tulika Sanadya, Soumya Dhani, Ritu Shri, Bhavna Monga, Indu Bala, Vijay Mehra ji, wonderful session, wonderful stories जो उन्होंने share करी past life regression की, and Meenu ji, you yourself, and Mansi, Dr. Malvika Jain, CK Arora, Vinay Babbar, Mainu Maral ji, and Sonal, where are you? Sonal Parihar, and of course, Vanita Keswani ji, right? So all gratitude to all these trainers, and the gratitude to our observers also. So observers, Harmeet ji, you are the first one, right? Yep. Harsha Garg and Manish Kumar, Sonal again, Vinay Babbar, and Mamta Shard. So I, from bottom of our heart, we are truly grateful to you for being here and spare your time and energy and made us, enlightened us. And now it's time to... And Shabana also. Yeah, and Shabana ji also, right? Okay. Without fail. Without fail. He is, biggest motivator. Yes, yes, yes. So Thank you. back to you, Meenu ji, for the formal concluding of this festival. Meenu ji, you are there? मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई हैं. Anyway, so can we conclude, Shabana ji? Nupur ji, आप एक concluding remark दे दीजिए. So thank you everyone for being here, for celebrating life. My mantra is celebrate your life and with light. So thank you everyone for being with us on this Mavin Global Learning and Training platform. And I will hand over my stage to Meenu ji. She's back here for her conclusion. Yes. Okay. So I had to come in for that final word, no? So Yeah. Yes. network Yeah. brought me back. Yeah. Yes. So first of all, I'll thank Sonal because she joined this evening by saying that I'm not feeling well. I will go quickly. And she's been with us throughout. Thank you so much, Sonal, for staying around. Thank you so much. And thank you everyone for joining in. Thank you, the Mavin platform. Thank you, all the trainers. And of course, a special thanks to Sandeep ji, Harmeet ji, Nupur, of course, and Shabana to hai. And of course, our participants, Sheetal, Deepti, Arun, everyone. सबने बोल दिया पर मैंने कहा मैं भी ऐड कर देती हूँ. So sweet, so sweet. Thank you so much. Thank you everyone for being over here. Thank you. Vanita ji also, thank you so much for joining in. Last moment पे she's come and like Thank you. energy ले आई सारी session energy लेके आ गई. Thank you so much. Thank you. Thank you to everybody. All I was listening and it was a beautiful sharing by everyone. Thank you. So I think there's a word called Hasta Manana till we meet again. Thank Yes. you. Yes.